Hello, guys. Good evening and welcome to Nikaalo Prelims session. So, today we are on day 8 of Nikaalo Prelims session, and so I've got something planned new for today's session. Good evening, Harini. Good evening, Nikita. So, I've got planned something new for this particular session. We've got अ न्यू सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे। आप जैसे अभी तक आप सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर्स लिखते आ रहे हो, बट अब व्हाट यू कैन डू इज आप लाइव आंसर्स टिक करके उधर पे आपके आंसर्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव। तो इसमें आपको क्या करना है गाइस, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू www.menti.com। आप ये जो पर्टिकुलर साइट है इस पे क्लिक करिए, इस पे जाइए और आप ये पास कोड डाल दीजिए। जब आप पास कोड ये डालेंगे तो आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं स्लाइड दिखा रही हूँ आप आंसर्स तभी के तभी उधर पे सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमें स्क्रीन पे दिखेगा हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, so let's try out this particular way of taking care of your answers. So guys, आज basically जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन योर डे 8 एंड द टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विद इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन बजट, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत एम्फेसिस देंगे एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइज कैन गेट द आंसर करेक्ट एंड how many of you are still lagging behind a bit in your preparation. ठीक है, तो ये एक लाइव सेशन है जिसके थ्रू आप लाइव आंसर्स कर सकते हैं। तो हरिणी, निकिता, क्लाउड, योगेश्वर्या, आप सब जाइए www.menti.com। एक साइड में अपने मोबाइल पे खोल लीजिए या आप अगर लैपटॉप यूज करें तो टैब खोल लीजिए। आपको सिर्फ ये कोड डालना है और कुछ नहीं करना है एंड ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपके पास आने शुरू होंगे। ठीक है, ओके गाइज, लेट्स ट्राई इन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप चैट बॉक्स में डालिए एंड अगेन वील सी वेदर यू आर एबल टू आंसर। नहीं होता है तो हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप उस साइट पे जाएंगे एंड उसको ओपन करेंगे टेस्ट के थ्रू, आपको भी एक क्वेश्चन दिखेगा एंड आप उसमें अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। तो आई एम वेटिंग कि यू गाइज गो एंड स्टार्ट सबमिटिंग। सो ओके, आई गॉट वन आंसर हियर, राइट। ठीक है, अदर पीपल इफ यू वांट टू ट्राई, आप जाइए। आई थिंक one person has answered. Go ahead. So the question is, what is the correct statement with respect to of budgeting borrowings? ठीक है, so basically number 1, whether these loans are taken by public sector undertakings on behalf of union government and who is responsible. Second option is talking about who is responsible for principal and interest payment done, and then third we're talking about whether it constitutes a fiscal deficit or not. So guys, come on, go try this out. ये आंसर आप ट्राई करिए। ऑल यू गॉट टू डू इज गो टू menti.com and menti.com पे आप ये okay, I've got another answer. Somebody is saying so I've got 2 answers. Someone is saying कि 1, 3 all are correct and one is saying कि 1 is only right. What about others? योगेश्वर, फिनिक्स, तारा, आपको सिर्फ ये ऊपर जो पास कोड दिया है ना 44262 एंड 0046 ये सबमिट करना है। ओके, सो आई हैव गॉट कपल ऑफ आंसर्स अगेन फॉर अच्छा, आई हैव गॉट कपल ऑफ आंसर्स. सम पीपल हैव आंसर्ड okay, 40% it's going for 1 and 3 and 1, 2 and 3. मैं question I'm keeping it open for you guys if you want to try any further. So there are couple of answers with respect to option 1 and B, then there is 1 only and then there is 1, 2 and 3. So here again we'll look at the आपको मैं 1 मिनट और देती हूँ, आप ट्राई करिए इस आंसर को। ठीक है, go ahead guys. So guys, all of you
uh, who answered 1 3 and 1 only and 1 2 and 3, they were in fact wrong here. ठीक है. Just a small explanation, जैसे I could not see any right answer here. ठीक है. I hope you guys are able to understand how this mechanism work. All you got to do is click the right answer there. ठीक है. अच्छा, इसमें आंसर क्यों गलत था? किसी के पास explanation है यहाँ पे? Anybody who wants to explain me कि what is wrong with the third option, or what do you mean by off budget borrowings? Because I just got not even one answer which was correct here. Come on, guys. So guys, ऑफ बजट बोरोइंग्स, जैसे नाम से आपको सुनाई दे रहा है, ऑफ बजट बोरोइंग्स इज बेसिकली दैट इज डन आउटसाइड ऑफ whatever which is included in the consolidated fund of India and the finance it is presented in the budget. ठीक है. So it is kept outside. So directly what is happening is union government is not borrowing, but on behalf of it some other public sector undertaking is borrowing. ठीक है. तो पहला statement is obviously correct here. ठीक है. Anybody else who wants to try with second and third, please साथ में अपना आंसर डालिए. ठीक है, arguments में, because again that shows that you're able to understand the question. ठीक है. Second statement is also right, because guys see, the loan is taken by the public sector undertaking, but जो फाइनल जो पेमेंट का वो रहता है, क्या बोलते हैं, जो फाइनल पेमेंट करनी होती है, दैट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से ही वो फाइनल आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेड. लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज अगेन अगर आपने पढ़ा होगा ऑफ बजट बोरोइंग में बेसिकली लेता किस वाई द गवर्नमेंट टेक्स इट इज सो दैट उनका फिस्कल डेफिसिट कम रहे. ठीक है. सो फिस्कल डेफिसिट कम रखने के लिए, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द फिस्कल डेफिसिट, दैट इज वाई वी डू बोरो ऑफ बजट बोरोइंग्स. ठीक है. इसलिए ये जो थर्ड पैरामीटर है, इट इज नॉट वर्किंग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट parameter. ठीक है. So that was the argument here. Hope you guys understood well. Next, let's move on to the next question. ठीक है. मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ. You guys start answering. I hope आपके पास वो आंसर आ गया है. It reflects. तब तक प्रेरणा is asking कि can you explain the concept again? प्रेरणा, see, off budget borrowing is the borrowing which the government directly does not does, but उनके behalf पे indirectly PSUs करते हैं. जैसे ऑयल इंडिया है, अगर वो अपने फाइनेंस में जैसे वेरियस ऑयल इंडिया वेरियस टाइप के इनिशिएटिव्स से, जैसे बॉन्ड्स के थ्रू या लिक्विड डेप्स के थ्रू वो बाय कर रहा है मार्केट से, सो बेसिकली इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के लिए मनी क्रिएट कर रहा है वहां पे. क्रिएट इन द सेंस कि एक कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, विच विल डायरेक्टली नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बट दैट PSU. ठीक है. सो दैट इज द फंडा बिहाइंड ऑफ बजट बोरोइंग. Next question is on non-tax revenues, guys. So I don't see any answers. Come on, please try. This is a very question from your basic what do you say, GS portion. ठीक है. तो try करिए कि क्या आंसर हो सकता है इसमें. So okay, I see one answer coming, which is the answer B. All right. Okay, there's another answer which is the answer D. So I've got two answers here. Come on, guys, try. Okay, I've got 1 3 also. So what about others? What do you think? What is the answer here? Go ahead, type in, submit your answer. See, this is a very interactive way to take care of your quiz, because again we can see how the answers are varying with respect to what people are thinking in this process. ठीक है. Go ahead, चलिए try करिए. और क्या answers हो सकते हैं यहाँ पे guys? I want some more answers. And इसी टाइम पे अगर कोई नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बताना चाहता है, वो क्या होता है? सुधाकर इज टाइपिंग बी. सुधाकर प्लीज आप ट्राई करिए, गो टू द menti.com साइट एंड ये जो ऊपर कोड लिखा है ना 44620046, वो टाइप करिए. यू विल बी एबल टू टेक पार्ट इन द क्विज डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है.
सो आप चैट बॉक्स में अपनी एक्सप्लेनेशंस डाल सकते हैं. यू कैन गिव योर आर्ग्यूमेंट्स, बट डू ट्राई टू गिव योर आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड डी in the quiz format only. ठीक है? So come on guys, I'll give you one more minute to answer this particular question. Okay, I've got one more answer with respect to D now. Great. Any more answers? Anyone else who wants to? You can take a wild guess also, if like through your common sense or elimination technique, if you want to apply that. Go ahead guys. So guys, इसमें क्या है आपका आंसर? Let's look at the answer here. The answer is B. So I think Sudhakar answered in the comment box also, but there was also one vote with respect to the answer B here. ठीक है? And can anybody tell me why have we eliminated the option 1 and option 5? If they are not part of your revenue receipts, then what are they part of? ठीक है? If you've done your proper revisions with respect to this chapter, I think you'll be able to answer this particular question. Go ahead guys, try somebody कि इसमें आपका 1 or 5, why is it not part of this particular non-revenue receipts thing? Anybody who can answer? Again, see, देखो डिविडेंड्स, अगर डिविडेंड सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि वो यस निकिता, एक्सलेंट. Disinvestment as well as your government borrowings is actually part of your capital receipt. So good participation here. But I think I would still want you guys to go and try out answer through this particular site ताकि हमारा participation looks nice here. ठीक है, चलो next question देखते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनी सप्लाई से रिलेटेड, एंड इट्स आस्किंग हाई पावर्ड मनी. ठीक है, सो मनी सप्लाई इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड आल्सो, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. यू हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स हियर. वन इज अगेन वेदर हाई पावर्ड मनी, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, or whether, and second statement is whether it is the strongest currency in the world having the highest level of liquidity. So आपके पास options है, you've got option 1, 2, both, none of the above. So go ahead guys, if you can go ahead, write the answer and try it out. ठीक है, अपना आंसर वहां पे मार्क करिए. ओके, आई गॉट वन आंसर हियर. I've got one answer where the person is saying ki 1 and 2 both are right. Okay, another answer I've got where somebody is saying only one is correct. Great. What about others? What do you think? What is the answer here? Okay, good. So I've got 2 votes again. Okay, good. I've got 1 only, 2 only, and then we've got couple of votes for both. All right, so I'm getting more and more support for the option C, and the support for 1 and 2 is decreasing. So somebody who had answered 1 and 2, can they give me the argument why do you think that the second statement or the first statement was wrong? So Pankaj has mentioned in the option that 1 is correct. Pankaj, do try and participate in the quiz. उसमें answer करो, write the code. You just have to go to menti.com and use this particular code जो ऊपर लिखा है यहाँ पे. अगर आप देखो 44344620046. ठीक है. Okay, so I think maximum votes have gone to option C, and then we've got option A, and then we've got option B. ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी. सॉरी, high powered money. Okay, sorry, I think
Yes, it is actually, it was supposed to be incorrect. So anybody who answered one also was actually right here. Yes, Satyam, option one was right, but whoever answered both were right were obviously wrong. ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ा इनकरेक्ट होना था, बट उस हिसाब से आई गेस option 1 people is right here, not the option 2, because it had to be like the option was marked with respect to incorrect. अच्छा, option 2 क्यों गलत है यहाँ पे? Option 2 इसलिए गलत है क्योंकि it is the not the strongest currency. Can somebody tell me what is the strongest currency with respect to your क्या बोलते हैं, liquidity? कौन सी होती है स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैविंग हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी? इट इज द हार्ड करेंसी गाइस. अगर आपने सुना होगा ना, द करेंसी विच इज अवेलेबल थ्रू आउट, मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग होती है इन द सेंस, जैसे अगर डॉलर की हम बात करें, हम पाउंड की बात करें, हम यूरो की बात करें, ये जो करेंसीज होती है हम इनको यूजुअली हार्ड करेंसीज कहते हैं क्योंकि ये हाईली स्टेबल होती है. ठीक है, एंड दे सर्व्स एज अ मीन्स of a exchange at international level. ठीक है, people are saying cash and Nikita is saying MO. Guys, see here the second option was actually tilting towards hard currency. So first option is right. Yes, this currency actually consists of currency in circulation and deposit held by the government and the commercial banks. ठीक है, so good guys, there was a mistake with the question here, but anyways many of you answered C, which was actually wrong. So okay, great. चलो next question पे चलते हैं. A different concept here with respect to Pigovian tax, and I hope you guys are able to know what this particular tax is. So basic options क्या है हमारे पास? इसने बोला है कि पिगोवियन टैक्स के रिलेटेड व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट. ठीक है, सो नंबर 1 स्टेटमेंट इधर पे क्या है? इट प्रमोट्स मार्केट एफिशिएंसी. सो गाइस गो एंड मार्क योर आंसर्स. Second is it promotes government companies over the private companies. Okay, I've got one answer. Then third is it discourages the consumption of goods that creates negative externalities. So I've got 1, 3 here. ठीक है, what about others? What do you think the answer is? Go ahead guys, try what you think is the answer. I've got one also, so B and A. I've got couple of answers with respect to B and A, and there is more support for I think the option 3. Okay, if anybody can tell me why option 1 and 2 is wrong. ठीक है, or what is Pigovian tax? If anybody can tell me, I think that will also add to a good conversation here. ठीक है, come on guys, what else? Somebody else that wants to add the answer, submit your answer in the quiz. I've got a support for the third option here. Anyone else who wants to add the answer, please go ahead and add the answer. Any explanation here? Nikita, Sudhakar, and Prerna, Tara, Yogeshwara, Satyam, Cloud. Any explanation why the option 1 or C or D is wrong? Tax on goods that are not desirable for the society. ठीक है, good, great. So I've got another support for the option 3. ठीक है, not desirable. Satyam is saying it's not desirable for the society. Obviously option 3 becomes right. Why can't it increase market efficiency, guys, in the economy? Like, why can't Pigovian tax increase the market efficiency? If you think it in a very long term ideology here, why can't that happen? Try to think. I think, see guys, you have to remember this Pigovian वाला जो tax है ना,
it can have like it is basically a tax which will help to reduce the negative externality within the society. ठीक है. अब देखो इसके एडवांटेजेस भी होते हैं. कोई भी एक टैक्स सिस्टम है, सो इट विल हैव एडवांटेजेस ऑल्सो. सो नंबर वन, इन फैक्ट द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्सेस इज, although it may increase the tax collection, but it will impact human capital. Satyam is saying, see, what about see, if negative externalities are removed, say in the long run, don't you think that जो final cost है, that will reflect, the social cost. It will include the social cost, it will include the social benefit that comes out of the economy, and ultimately we'll have a better market efficiency. Because obviously you know the idea is, in future, for example, if you apply carbon tax, for example, if you apply sugar tax, okay, so there might be other alternatives which are coming in, plus that will boost the economy, that will bring in more options, but uske sath we'll also have more and more social improvements. So social, whatever the social output of this particular initiative is, that will also improve the economic activity, right? Assign exact cost on negative externalities, for example, pollution or health impact. ठीक है. Sonal is saying that it's very difficult. Yes, it is true. But when you go and understand the very idea of what is Pigovian tax and why is it useful, so iska benefits is number one, obviously it discourages harmful activities. ठीक है. आपका tobacco taxes हो गए, आपके sugar taxes हो गए, and carbon taxes हो गए. So obviously it's reducing the negative activity within the society. ठीक है. तो social capital आपका better out हो रहा है. सेकेंड इज ऑब्वियसली यू गेट अप्लाइंग टैक्सेस, जैसे आपका टोबैको हो गया, शुगर हो गया, तो ऑब्वियसली आपका द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट और द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्सेस इंक्रीजेस. ठीक है. तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज इंक्रीज हो गई. तीसरी चीज है मार्केट एफिशिएंसी इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. एडिशनल को सी, वेन एवर वी हैव मार्केट एफिशिएंसी, तो हमारा एडिशनल कॉस्ट इम्पोज हो रहा है. ठीक है. तो वो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एडिशनल कॉस्ट है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल शुगर टैक्स लगा रही हूँ, द प्रॉब्लम इज कि इफ आई ड्रिंक टू मच ऑफ शुगर, देयर माइट बी अ चांस कि फ्यूचर में आई एम गेटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, आई एम गोइंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी तो पड़ रहा है ना मार्केट पे. तो दैट इन फ्यूचर ओवरऑल इट रिड्यूसेस. सो ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी एंड द सोशल कॉस्ट एक्चुअली इम्प्रूव्स. ठीक है. So guys, I had couple of support for the 3. So 3 was in fact correct, but with it 1 was also correct. So I think most of you guys who answered 1 and 3, you both had your side of arguments, and in fact both of them were correct. Second was not correct. I think that is commonly understood here, that it is not supporting any kind of specific private countries over the other government countries. ठीक है. So any doubts on this, guys? Let's move on to the next question. ठीक है. So regarding generally, so this question is actually talking about your fiscal deficit. So it's saying that fiscal deficit takes place. So I hope you guys have revised this chapter properly. So basic reasons आपको बताने हैं fiscal deficit क्यों आता है. एक है high revenue deficit से, second है high capital expenditure, and third is major disinvestment by the government. ठीक है. So go ahead guys, try it out. क्या है इसका आंसर? I've got one answer which says, okay, I've got another answer here, which says all of the above. Then I've got one answer which says 1 and 2. So what do you think, guys? Fiscal deficit, how is it increasing? What do you think, guys? What is the answer here? Come on guys, start submitting your answer, because I think that ways it will be more and more interactive here. Okay, great. So I've got one also here. Somebody says only high revenue deficit. In fact, 2 people are saying high revenue deficit. ठीक है. Okay, I've got one more support for all of the above. Great.
a lot of participation here. Muskan, hi Muskan. You can also submit, Muskan, your answer on menti.com, and you can just log on to this site and you have to type this code. It is given above, 44620046. That way you'll be able to participate in the online mode. ठीक है? Sneha, okay, Sneha is saying 2 only. Again, Sneha, please go and register your answers here, because we are trying to keep maximum arguments in the comments section and the answers on the quiz format. ठीक है? So we've got couple of arguments that are coming into play. Muskan is saying, Sneha is saying that third can't be true. ठीक है? So I've got couple of answers here. I think major support, I think it's equal. So if somebody, one more person can actually answer this question ना, so we'll actually have one support for one option here. क्योंकि यहाँ पे 1 को भी सेम मिला है, 2 and 1 को भी सेम मिला है, all of the above. तो कोई एक है जो मतलब यहाँ पे एक डील, मतलब फाइनल सेटलमेंट कर सकता है आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन. समबडी कैन गो एंड आंसर देयर क्वेश्चन हियर. ठीक है? सो वील हैव द फाइनल आंसर. ठीक है? आई थिंक गाइज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि जो फिस्कल डेफिसिट है, सबसे पहली बात, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका फिस्कल डेफिसिट पे वो इम्पैक्ट आएगा. ठीक है? क्योंकि एनीवेज यू अंडरस्टैंड दैट रेवेन्यू डेफिसिट तब अकर होता है जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके ज़्यादा हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल रेवेन्यू. ठीक है? तो ये जो डिफरेंस आता है उसको उस गैप को क्लोज कैसे करती है गवर्नमेंट? थ्रू बाइंग मोर एंड मोर गवर्नमेंट बोरोइंग्स. ठीक है? तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स बढ़ रही है तो मतलब वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट में गैप ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट का भी गैप ज्यादा होगा. ठीक है? Have to pause the video. Sneha is saying that you have to. No, Sneha, you don't have to pause the video. आप लाइक 2 मिनट जाइए, आप जाके आंसर सबमिट करिए एंड देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो. इट्स लाइक इट्स हैविंग द सेशन इज हैविंग इन द लाइव फॉर्मेट. ठीक है? तो स्नेहा, जब आप ये आंसर कर रहे हो उसके बाद यू कैन कम बैक टू द डिस्कशन. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बिफोर हैंड. ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर. मतलब फिस्कल डेफिसिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रेवेन्यू डेफिसिट. अच्छा, अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी लो हो जाए, ठीक है, तो भी फिस्कल डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाता है, या उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला में डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आता है. ठीक है? अगेन, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ से योर एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू your capital expenditure. ठीक है? Obviously you are spending out more and more amount. ठीक है? तो आप अपना अमाउंट जब ज्यादा स्पेंड कर रहे हो and you have less amount of revenue at that point of time, so that is also creating problem here. ठीक है? तो again we've got an option here जहां पे इवन हाइक इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन इफेक्ट योर फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि आपका वो भी गैप इंक्रीज कर रहा है. एंड फाइनली डिसइन्वेस्टमेंट. अब डिसइन्वेस्टमेंट से देखो पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा कहीं जा नहीं रहा है. ठीक है? तो अब फाइनल टेक देखते हैं. यहाँ पे एक किसी ने आंसर किया है एंड somebody has voted for ऑप्शन 1 and 2. तो क्या है? सो आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थिंक मेजोरिटी वोट मिला है. आई एम नॉट श्योर, शायद 1-2 क्वेश्चन में और मिला हो, बट मेजोरिटी वोट इज राइट हियर. The 1 and 2 option is correct. Okay, great. I've got one more person who's supporting the option 2. So maximum votes have gone to 1 and 2, and the other options are wrong here. ठीक है? So I hope you guys have understood क्या इसमें बेसिक लॉजिक था. ठीक है? चलो अब क्विकली लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वील कीप दिस. आज फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोगों को भी वेबसाइट लॉग इन करना समझने में. इट कैन टेक टाइम, बट कल से वील कीप इट वेरी वेरी क्विकली, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो. विद इन से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टैक्सेशन पे क्वेश्चन है. सो आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा अपने स्टैटिक पोर्शन में. अब आपको ये बताना है
कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग क्या है. आई थिंक ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है, और सेकेंड स्टेटमेंट में दे आर टॉकिंग एंड लिंकिंग बोथ द कंसेप्ट टू योर डिस्पोजेबल इनकम. तो अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या है. डू आई हैव एनी सपोर्ट फॉर एनी आंसर हियर? ओके. Muskan is asking, is it a daily initiative? Yes, Muskan, it's a daily initiative. It's a free daily initiative that Civilsdaily is bringing to you. इसके साथ साथ we've also got a quiz session on Telegram. So basically it's like providing you with a good number of questions to practice. से आप अगर ब्रेक ले रहे हो शाम को थोड़ा सा, तो आप साथ में इस चीज़ पे इन्वॉल्व हो जाओ. आई थिंक आपका ब्रेक भी यूटिलाइज हो जाएगा बेटर वे में, थोड़े आप रिफ्रेश भी हो जाओगे, एंड साथ साथ में आपकी प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. तो अभी तक मैंने कितने आंसर्स देखे हैं? 2 आंसर्स मुझे मिले हैं अभी तक, एंड दोनों ने 1 को सपोर्ट किया है. व्हाट अबाउट अदर्स? किसी को लग रहा है बी सही है, या किसी को लग रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? व्हाट अबाउट दैट? So what arguments does other people have here? Come on. Go ahead. Okay, great. I've got couple of support for okay, I've got actually maximum support for 1 only, and then there is 1 answer with respect to 2, and then there's 1 answer with respect to none of the above. ठीक है, great. Okay, so the support for answer number 1 is increasing continuously. तो देख लेते हैं आंसर क्या है. अच्छा, इसका तो मतलब एवरीबडी इज वेरी वेरी श्योर इसमें आंसर ए ही है. अच्छा, जिनको इतना श्योरिटी है, क्या मुझे वो रीजनिंग दे सकता है व्हाई इज स्टेटमेंट 2 रॉन्ग? क्योंकि आई थिंक मेजर ऑडियंस इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है. सो एक मुझे बताइए आंसर ये क्यों सही है. आंसर इन फैक्ट 1 ओनली इज राइट, and in fact I saw maximum support that was provided for this particular answer. But what was wrong with option 2? Like इसमें लिखा है ना, as compared to proportional, progressive makes disposable income less sensitive to fluctuation in the GDP. ठीक है. Why do you think that? Come on guys, what do you think the answer here is? क्या क्या लॉजिक है? देखो, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? अगेन, डिस्पोजेबल इनकम इज समथिंग दैट इज अवेलेबल विद यू आफ्टर द टैक्सेस एंड एवरीथिंग इज गॉन. ठीक है. तो ये वाली जो इनकम है, ये कैसे लिंक हो रही है विद रिस्पेक्ट टू योर सी अगेन प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है? सी आइडिया, कैच द आइडिया गाइस, कैच द आइडिया हियर. प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज बीइंग टैक्स्ड द सेम. ठीक है. तो ये एक ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर रहा है. ठीक है. हर कोई अगर 10% दे रहा है, तो अपनी इनकम से कोई भी जैसे शॉक, जैसे कोई भी राइज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ, जैसे जीडीपी बढ़ी एंड सडनली द इनकम अवेलेबल इज मोर. बट अगेन द प्रोपोर्शनल इनकम मेक्स श्योर दैट एवरीबडी इज पेइंग सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम. ठीक है. तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इसमें सेव होती है. ठीक है. कंज्यूमर स्पेंडिंग हम कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि अगेन अगर प्रोग्रेसिव होगा तो हो सकता है कि जिसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है वो ज्यादा खरीद ले उस चीज को. ठीक है. जिस पे ज्यादा लग रहा है वो कम खरीद ले. तो अगेन कंज्यूमर स्पेंडिंग यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही है. थ्रू प्रोपोर्शनल टैक्सेशन वी कैन कंट्रोल द कंज्यूमर स्पेंडिंग, एंड उसके थ्रू जो सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इज रिड्यूस्ड. ठीक है गाइस. दैट इज वाई अगेन इट्स नॉट प्रोग्रेसिव. सेकेंड स्टेटमेंट में प्रोग्रेसिव नहीं आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट में आएगा इट इज प्रोपोर्शनल विच मेक्स द डिस्पोजेबल इनकम less sensitive to fluctuation in GDP. ठीक है guys, great attempt. So Cloud is saying that progressive will make sensitive and will decrease the income in hand of consumption and in turn affect the economy. Cloud, I think वहाँ पे you understood the concept that I'm saying here. ठीक है. चलो, let's take the another question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट डेफिसिट पे. ठीक है. अब आपको क्या बताना है? बजट डेफिसिट क्या चीजों को लीड करता है?
सबसे पहले आ गया राइज इन इंटरेस्ट रेट, सेकेंड इज डेप्रिसिएशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट टर्म, एंड देन ट्रेड बैलेंस इज पुश्ड टूवर्ड्स द डेफिसिट. ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन इन द सेंस कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें, मतलब इट्स लाइक कंप्लीट कनेक्शन के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो. आप देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या चेंज होगा और लॉन्ग टर्म में क्या चेंज होगा, इससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड रहना. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन. चलो गाइस, आई सी सम आंसर्स कमिंग इनटू द ग्राफ्स. और लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग? व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, मेरे को सारा सपोर्ट अभी तक 1 and 3 के लिए ही मिल रहा है. एवरीबडी इज वोटिंग फॉर 1 and 3 ओनली. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, आई गॉट 1 vote फॉर ए ऑल्सो. ठीक है, गुड. any more answers? Come on, Cloud, Muskan, Sneha, Satyam, and we had Pankaj, Nikita, Sudhakar, Prerna, Tara. Go ahead, guys. Acha, couple of answers coming into play. I think second answer is gaining importance here. But again, 1 and 3 अपना हाई मेंटेन करके रख रहा है. मेजॉरिटी वोट्स 1 and 3 के लिए जा रहे हैं. सो आई सी द ग्राफ मूविंग अ लॉट, बट अगेन 1 and 3 is something that we are sticking to here. What about Acha, Satyam is answering 2. Satyam, I hope you have answered it on menti.com also, so that we have an analysis where this answer is going. Cloud is saying 1 and 3, and I think Cloud, you are answering on the menti.com also. Okay guys, so I've got good ample amount of votes, and majority vote हमारे गए हैं 1 और 3 को, and answer भी 1 and 3 है. And good you guys, मतलब मैक्सिमम 50% वोट्स हमारे 1 and 3 को गए. अगेन 1 and 2 हैड इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हियर. अच्छा, इसमें मैं बार बार ये क्यों कह रही थी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ध्यान रखना, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में एप्रिसिएशन होगा. ठीक है, क्योंकि जब भी आपका अब देखो यही लॉजिक लगाना है इसमें. क्या लॉजिक है कि आपका जब बजट डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, अब बजट डेफिसिट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी कंट्री इज हैव टू बोरो मनी टू फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग. ठीक है, इसका मतलब उसको इन्वेस्टर्स चाहिए टू लेंड द मनी. ठीक है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट जब करेंसी बढ़ाता है और वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट मीन्स कि जो उस करेंसी की डिमांड है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री, तो उस कंट्री का जो डिमांड है फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी इट इंक्रीजेस. तो उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में, ठीक है, करेंसी एप्रिशिएट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिशिएट नहीं होगा, यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा करेंसी का. ठीक है, लॉन्ग टर्म में देयर इज अ डिफरेंस. लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, अगेन यस, अविनाश ने मेंशन किया है, इट कैन ऑल्सो ट्रिगर इन्फ्लेशन. अब ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है अविनाश, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म बोला था, तो शॉर्ट टर्म में तो आपका एप्रिसिएशन आएगा, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. ठीक है, फिर ये हमारे कॉस्ट को इफेक्ट दे सकता है. तो उससे क्या होगा, जब इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पे इफेक्ट होगा तो स्लोली दी इकोनॉमी विल गेट इफेक्टेड. स्लोली क्या होगा, हमारी डिमांड एंड सप्लाई, वो डिमांड जो है विद इन जो बूस्ट मिला था इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, उससे क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म देयर माइट बी सम डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये एप्रिशिएट करता है यूजुअली, बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रहा है. ठीक है, एंड ट्रेड बैलेंस तो अगेन दैट इज लाइक, अगर आपका एप्रिसिएशन हो रहा है शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली योर ट्रेड बैलेंस इज गोना बी पुश टूवर्ड्स डेफिसिट. ठीक है, so guys, answer was 1 and 3, and final count here is I've got 50% vote for 1 and 3. Some people 52% हो गया, nice. 55, okay, good.
and some people voted for 2 also, like that was the second highest vote, and then there was 14, 13 with 1, and then there was 3. Okay guys, so good amount of answers here. Next, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है. आई होप यू गाइज लाइक दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है. ये क्वेश्चन हमने बजट से उठाया है, ठीक है. आई होप यू गाइज लाइक दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, and I can see more and more participation that would happen in future. ठीक है. Go ahead guys, try it out. So we've got 67% vote for sanitation, 22% is going for textile industry. Some people are saying operational assistance to entrepreneurs. Acha, all the options got some support here. Nice. Go ahead guys. और क्या है? See, this is a very direct question. मतलब ये basically हमारे budget से उठाया हमने question, एक scheme mention था, and we've directly placed it here. So this is kind of your revision for budget questions also. ठीक है? ठीक है. So the support for the option C is increasing. Nice. This I think was a very easy question as compared to the other questions that we've seen abhi tak. So anybody else who wants to put their vote here, go ahead, write your answers, and then we'll take the final discussion on this particular question. So guys, अब जो हमारा बजट था, ठीक है, उसमें 2023 वाले बजट ने गवर्नमेंट ने 100 करोड़ एलोकेट करे हैं इस स्कीम के लिए, विच इज नमस्ते स्कीम, ठीक है. एंड इसमें क्या है, बेसिकली द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि वो मैकेनाइज करे सेप्टिक टैंक जो क्लीनिंग है उसको, या जो सीवर क्लीनिंग है उसके लिए टाउन्स एंड सिटीज में, ठीक है. सो अगेन द स्कीम प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ लाइवलीहुड टू सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है. तो दिस particular scheme will look at how new jobs can be created in this particular sector, and finally how the behavior change with respect to sanitation and its workforce can happen. ठीक है. तो आप लोग काफी लोगों ने ये आंसर सही दिया, गुड, एंड आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आई वुड प्लेस इट इन द इजी कैटेगरी. ऊपर वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, सो वी हैड मिक्स बैच ऑफ आंसर्स देयर, बट अगेन दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. एंड great you guys. I think आज का session was very very interactive. Manish is saying C. So Manish, yes, you are right. I hope you like this kind of format. आप chat box में लिखिए if you're liking this particular format. We can continue this format for tomorrow also. ठीक है. And we'll get more difficult questions for your session, ठीक है, tomorrow. And any comments that you have with respect to this format, if you're liking this particular format, तो आप इसको लिखिए chat box में. And कल हम आपसे फिर से मिलते हैं. We'll meet you guys again with the same initiative, but again the topic will be different tomorrow. We'll be dealing with financial markets, which is day 9. Also we've got YouTube session. इसके साथ साथ हमारा Telegram पे भी एक session होता है which goes from 6 to 7. Again वहाँ पे भी question solving होते हैं, but that is picked up from your current affairs. These questions are picked up from your static portion based upon the previous year questions themes. ठीक है. तो आपका static basic जो है वो हम YouTube पे कवर कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड जितना भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पे कवर करते हैं. इसके साथ साथ निकालो प्रीलिम्स इज ऑल्सो ऑफरिंग यू फ्री मटेरियल. स्पॉटलाइट होता है जिसमें हम बेसिक आइडियाज देते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं और उसको अपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसकी एक PDF आपको मिलती है. सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ऑल यू जस्ट गॉट टू डू इज go and join the Telegram link. I'll provide the link in this particular session. इसके comment में मैं वो link provide कर दूंगी Telegram के लिए if you want to join the current affairs classes also. So guys, thank you so much for joining today's session. I've got actually 2 likes on the
on the comment section also, as well as I'm seeing a lot of likes that are coming on my on the Mentimeter site also. So thank you so much, guys. We'll see you tomorrow with same set of questions, and we'll keep the difficult level a bit high so that you can practice better. Okay, guys, see you. Thank you so much.